Hello and welcome. I'm Kumar Wani. I make videos on syllabus topics, study skills, and career guidance. In today's class, we are going to look at communication skills, meaning, and types. So, let's start with the learning objectives of this presentation. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे what is communication, the process of communication, types of communication, and types of communication in organizational settings. This is not all. We are going to also discuss about review questions. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस सवाल से कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा शब्द है जो लैटिन कम्युनिस इस शब्द से आया है, विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन. कम्युनिकेशन is ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कन्वे ऑफ इंफॉर्मेशन. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति अपने ग्रुप के साथ, फ्रॉम पर्सन टू अ ग्रुप और फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप जो भी बातें शेयर करता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज टेक प्लेस इन अ मीनिंगफुल वे. ओनली देन इट इज़ अ कम्युनिकेशन, अदरवाइज इट्स अ मिसकम्युनिकेशन, राइट? सो a person can talk with another person, a person talk with a group or to another group. That is called communication. Communication involves verbal and non-verbal signals. In the process of communication, we use verbal signals as well as non-verbal signals. It can be spoken or written also. Sometimes we speak and sometimes we write. In both the forms, we call it a communication. Objective of communication is to convey meaningful information. As I told you, जब भी हम communication करते हैं तो जो intended meaning है speaker का वो listener तक जाना चाहिए, तभी उसको हम successful communication कह सकते हैं. Otherwise it will not be a communication. तो communication simply means to share or to make things common. It is a transfer of information from sender to receiver, from speaker to listener. The communication can be a process of involving a person and another person, a person and a group, or a group to another group. It involves verbal and non-verbal signals. As I told you, communication can be spoken or it can be written as well. And it should be noted that the purpose of communication is to make and convey meaningful information. So, what is the purpose of communication? Good communication develops good relationship, good cooperation, and it also promotes collaboration. Now let us see what is the process of communication. The process of communication refers to message, transfer of message from a sender via a channel to the receiver in a given context. In a particular situation, we send information from one person to another person. The sender of the message and the receiver of the message are two important factors in this given context. So let us try to understand what is the process of communication. As I told you, sender and receiver are two important factors, two important elements in the process of communication. And there are the steps through which this process takes place. Encoding is by sender through a channel or medium is called language. Language happens to be the channel, language happens to be the medium for communication, and this message goes through a process where it is decoded by the receiver. The message from sender to the receiver goes through certain steps, which is called encoding, which is called channel, which is called decoding, and this information, this message, if reaches to the receiver
in a proper way, then the receiver gives feedback to the sender. Now this process always do not happen in a peaceful manner. There are some hindrances, there are some barriers which are bound to happen, and that is why there is a noise around, there may be disturbances around in the process of communication, which sometimes hampers. But overall the process of communication goes through these stages. तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोसेस जो जाती है उसमें सबसे पहले इनकोडिंग होता है। सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, उस मैसेज को इनकोड करने के बाद एक टिपिकल पर्पसफुल कॉमनली अंडरस्टूड चैनल होता है जिसको हम मीडियम या लैंग्वेज भी कह सकते हैं, उसके थ्रू वो पास होती है वो प्रोसेस। और जब वो रिसीवर के पास जाती है तो रिसीवर को भी वो चैनल या मीडियम आता है, लैंग्वेज आती है, इसलिए उस मैसेज को वो डिकोड करता है और अपने सेंडर को, जिसने ये मैसेज भेजा है, उसको वो फीडबैक देता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक स्टेप्स के थ्रू जाता है, और ये प्रोसेस होते टाइम होपफुली ऐसा हो भी सकता है कि उसमें डिस्टर्बेंसेस आए, समटाइम्स देयर मे नॉट बी डिस्टर्बेंसेस। सो दिस इज़ ऑल अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में होता है, गिवन सिचुएशन में होता है। अदरवाइज दिस प्रोसेस इज़ नॉट bound to convey the meaning what it is intended. Now let us try to understand what are the types of communication. There are two types basically, verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication में कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन, जो हम राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें लेटर्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, मेमोज़ आते हैं, या फिर लेटर्स, ईमेल्स, मेमोज़, या फिर आज के दौर में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो भी इसमें आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि वन पर्सन टॉकिंग टू अनदर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो बात करता है थ्रू द यूज़ ऑफ साउंड्स, उसको भी हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और थर्ड टाइप इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कुछ पिक्चर्स या पोस्टर्स या साइंस या सिंबल्स के हेल्प से कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स हैं, जिसमें आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, और वो टेक्स्ट भी एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन ही है। और विजुअल कम्युनिकेशन में रिटन भी होता है, रिटन कम्युनिकेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और ओरल कम्युनिकेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. Visual communication enhances the understanding. Visual communication is a kind of thing that helps sender like me to get the message across to the listener like you. So visual communication is a very powerful tool in a given situation. Now let us try to understand what are the factors, what are the types, subtypes of non-verbal communication. तो सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो पॉइंट आता है वो है पर्सनल अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस मीन्स हाउ यू लुक. तो जैसे आप दिखते हो, मतलब हाउ यू आर ड्रेस्ड, हाउ यू आर ग्रूम्ड, विच एक्सेसरीज यू हैव वोर ऑन यू विद यू. एंड पर्सनल अपीयरेंस का मतलब है आप कैसे दिखते हो, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपने कौन सी घड़ी पहनी है, होपफुली आपके शूज़ कौन से हैं. तो पर्सनल अपीयरेंस का मतलब है आपका जो आउटवर्ड लुक है वो कैसा है, एंड दैट मेक्स के आप उसके थ्रू, आपके अपीयरेंस के थ्रू कैसे सिग्नल्स भेजते हैं, आप कैसी इमेज आपकी प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल अपीयरेंस. फेशियल एक्सप्रेशंस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इफ़ यू नोटिस द facial expressions on my
face, you can see that I am trying to uh, teach you, I am trying to explain you what are the types of communication, verbal and नॉन वर्बल, जैसा हम अभी देख रहे हैं. तो फेशियल का एक्सप्रेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके चेहरे पर दिखाई देती है. जैसे कि अगर आप हंस रहे हो, आपने छोटा सा स्माइल दिया है, तो यू आर showing that you are in agreement with what the speaker is saying. अगर आपने ऐसी आंखें की, बड़ी आंखें की, तो आपको या फिर आपको वंडर फील हो रहा है, या फिर यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर हेटिंग इट, वट एवर. तो अगर आपने ऐसे किया तो आपको लगेगा कि यू आर एंग्री ऑन समथिंग लाइक दैट. सो फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो हेल्प इन communicating what you are saying or not saying through the words, through the sound, right? Body language. Body language is also a part of non-verbal communication. जहाँ पर देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो हैंड्स है उसके अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स हो रहे हैं. तो वाई आई एम यूजिंग हैंड्स, हैंड मूवमेंट्स एंड विच आर कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज आप जब बात करते हो तो उसको आप सपोर्ट करते हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी जो बातें हो रही है, आप जो बात कर रहे हो, उसको सपोर्ट करने वाली चाहिए. मतलब अगर आप कह एक रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है, तो दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग द मैसेज अक्रॉस in an intended way. Otherwise, it will not aid, it will not help in getting the message across. Similarly, eye contact is also a part of non-verbal communication. Say, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखा है, तो इट मीन्स दैट द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग यू. Otherwise, you can also infer, you can also take out the meaning that if the listener is not making eye contact, he or she may not be interested in what you are saying. Same thing, if a speaker is making eye contact, the speaker is confident. Otherwise, if the speaker is not making the eye contact, you can say the speaker is not confident and he have some wrong intentions, or he is in the mood of deceiving you. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो व्यक्ति सिंसियर होता है, ट्रू होता है, he or she makes eye contact, and the person who is not true, who had some false intentions, he will not make eye contact. So eye contact is a very powerful tool to understand the non-verbal communication. Whenever you are in communication, you just concentrate on the speaker's eye movements, and you will come to know whether the speaker is confident, true, or intending what he is saying. The meaning of his words is what he intends to convey, right? नेक्स्ट पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, हैप्टिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स. हैप्टिक्स इन जनरल सेंस वी कैन कॉल इट कम्युनिकेशन बाय टच. समटाइम्स जब हम बात करते हैं तो वी ट्राई टू टेंड टू टच समवन, राइट? सो व्हाट हैपन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं और किसी को हमने टच किया, वी वांट टू ग्रैब हिज और हर अटेंशन, right? But we have to be very mindful and careful when we are touching someone. In different cultural contexts, in different cultural situations, touch may be acceptable or touch may not be acceptable. So it depends on which condition, which cultural context you are communicating, and accordingly you can use touch to complement your communication, or it is always better to think first, grasp whether the touch is acceptable or not, and then move with that way of communication. Proxemics means the kind of distance that we maintain from the listener, from the speaker, like that, the distance between speaker and listener. समझ लीजिए, if we are friends, we can be at 1 feet or 2 feet distance with each other while we are talking with each other.
And if I am talking with stranger, I may maintain a certain long distance, maybe 3 feet or 4 feet. uh, I'll maintain the distance because I'm not acquainted with the person with whom I am talking, right? So a distance from the sender and the receiver, between the sender and the receiver, also matters, and it also contributes to the non-verbal communication. Apart from this, now we'll focus on communication in organizational setting. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली अ office setup where uh, there are seniors and there are employees, there are bosses and there are their subordinates, there are juniors. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, राइट. तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन कैसे होता है. तो इस कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट है, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स a communication that follows a structured pattern of communication where there are certain rules, there are certain formulas, there are certain styles, there are certain methods. So formal communication has to follow those rules to be called it as a formal communication. There are three types of formal communication. One is downward communication. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ऑफिस का जो बॉस होता है वो अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मेमोज देता है, कुछ अनाउंसमेंट्स करता है कि these are the objectives of our work, these are the objectives of our office and we have to carry out this work as per these policies and like that. So certain work policies, certain rules, certain methodologies are communicated by the bosses to their employees. तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. उसी तरह अपवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे employees, subordinates who are working under the directions of boss, under the direction of the executive, they convey their feedback to their office, they convey their input, they convey their suggestions to the office, they convey the work progress reports to their executives and their bosses. So they also can suggest areas of improvement in the work policies and the work environment like that. So जब एम्प्लॉयज़ अपने बॉसेस को, एम्प्लॉयज़ अपने एग्जीक्यूटिव्स को कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. जो थर्ड काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो एक विद इन द टीम होता है. एक डिपार्टमेंट है जिसके बहुत सारे कलीग्स हैं, तो अमॉन्ग देम द कम्युनिकेशन हैपन्स विच इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. जैसे मान लीजिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो मिलके काम करते हैं. तो जो इश्यूज़ और जो कंसर्न्स, जो थॉट्स, जो आइडियाज़ वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. अभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसको जनरली हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन is not an official communication. It spreads through, it happens through unofficial sources and it is not reliable. Mostly informal communication जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता.
sometimes that may contribute to develop team spirit among the colleagues, and sometimes it can hamper also, it can create disturbances also, it can create misunderstanding also. So organizational setting में फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन लीड्स टू work output and performance, and informal communication is an added advantage among the colleagues to develop the team spirit, to develop personal bonding with each other, to perform better. लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो होता है वो समटाइम्स दैट कैन बी डेंजरस आल्सो बिकॉज इट डज नॉट कम फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, राइट. सो ये कुछ बातें हैं जो इस पार्ट में हमने सीखी. तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस व्हाट आर द रिव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. What is communication and explain its process? So this topic is very important when you study it for your academic preparations. So in this question you have to define what is communication and the process of communication. You have to explain the process of communication, how that process takes place through different steps: sender, message, encoding, channel, receiver, and decoding, like that. Okay, so you have to write a detailed answer for this question. Second question is explain the different types of communication. Here you can write about, ये क्वेश्चन है कि आपके जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से होते हैं. यहाँ पर आपको वो लिखना है कि आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है और आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको आपको लिखना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर verbal communication, there is verbal communication in which there are three elements, three subtypes: oral communication, written communication, and visual communication, right? And in non-verbal communication we can go from personal appearance to facial expressions to eye contact to body language, then proxemics and haptics. You have to explain these subtypes when you are discussing about the types of communication. The third and most important question we can discuss on this topic is the process of communication in organizational setting. तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, वो कैसी होती है. तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. जैसे हमने देखा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है जो बॉसेस अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को देते हैं. अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो जो अपने एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो अपने सीनियर को करते हैं. और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो जहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट के लोग, एक ही कैडर के लोग, एक ही लेवल के लोग आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, राइट. और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एक दूसरा भी टाइप होता है कम्युनिकेशन का, जिसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो जिसमें ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं. तो ये कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि जब हम इसका आंसर लिख रहे हैं तो इट शुड फॉलो अ स्ट्रक्चर with introduction, then the points of the answer, and then the detailed discussion of the points, right? I hope कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मैं सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हूँ. यू कैन रीच टू मी थ्रू email also, and don't forget to check out my website meritup.in. और अभी आपको अगर और सिलेबस टॉपिक्स पर लेक्चर्स देखने हैं और आपको कुछ
स्टडी स्किल्स भी सीखने हैं और कुछ करियर गाइडेंस भी चाहिए, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल Meritup. Thank you.